वाला corner ही है. Bobby, in a recent interview, you said that there's a lot of work that you want to do, but perhaps didn't realize when the roles started slipping away. I wanted to understand, is it a very difficult state to be in when there's a lot of work as an actor that you want to do, but the roles have started to drying up? As I said in that interview which you read, is exactly what I feel. So definitely, I mean, as an actor, you want to work every day of your life. I mean, when I did this film, I was so excited because first of all, the script had really excited me. My character, Shreyas, and me worked on it, and it was like every day was an amazing day. So for every actor, the biggest fear is to have work the next day. But you got to work hard, look positive, think positive, and work just starts coming towards you. So here I am sitting and talking about my film. That's how it happened. Because the perception, Bobby, is that perhaps an industry kid will have it easy to get work. So I don't know. That's just the way the media portrays celebrity kids when they're coming into movies. I don't think it's so easy for anyone. You can be a kid of a star child, or you could just be a normal child coming from a totally non-filmy family, but you still have to work hard, and your luck also plays a part in it, but you still have to think positive, and positive attitude always gets you something positive. Around that, Sunny, just one इसके लिए last मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा. ये जो आप कहते हैं ना बड़ी एक्टिंग अच्छी की है, इसे रिएक्शन, इट्स नॉट एन एक्टिंग. और कोई भी जज्बाती इंसान जिंदगी में, मैं किसी स्कूल में एक्टिंग सीखने नहीं गया साहब, आज कोई बुरा एक्टर नहीं हूँ मैं, तो जज्बाती था तो झट से रिएक्शन हो जाता था. किसी ने प्यार से बोला धर्म तुम बहुत अच्छे, तो इतना हो जाता था. किसी ने गुस्से में बोला तो तेरी, तो इस तरह से रिएक्शन झट हो जाता था मुझसे. मैं वही एक दिन बैठा बैठा एनालाइज कर रहा था, मैं एक्टर कैसे बन गया यार, ना स्कूल में गया हूँ. तो रिएक्शन को फिर मैंने सीख लिया कि कहाँ कितना रखना है, कितना ऊपर ले जाना है, और सामने वाला क्या बोलता है उससे मैं लेता था और रिएक्ट करता था. तो इस तरह करते 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 ऐसी कुछ शौक था, शौक नहीं, ये नशा था मुझे, और इस नशे को मैं आहिस्ता आहिस्ता पीता गया. ये सिर्फ रिएक्टिंग है, एक्टिंग नहीं है. और कोई भी जज्बाती इंसान फ़ौरन रिएक्ट करता है. कोई पत्थर दिल या और टाइप के जो सिर्फ अपने उसमें खोए रहते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते जल्दी. लेकिन आवाम देखने जाती है थिएटर में, वो रिएक्ट करने के लिए बैठी होती है, क्यों जाती है रिएक्ट करने के लिए, और उसके अपने एक्टर होते हैं. एंड व्हेन दे रिएक्ट गुड, दैट इज़ द सक्सेस. So what I am explaining is my experience for the last so many years, कि यार तू किसी एक्टिंग में स्कूल में नहीं गया, कहाँ से आ गई तुझे, और दुआ फिर ऊपर वाला तो साथ होता ही है. तो इस तरह से जो आपका सवाल था शायद यही, इसको मैंने कुछ but Sunny, one last thing. सॉरी, so that's the only time मैंने कुछ गलत समझ लिया तो कुछ और दूसरी तरफ चल पड़ा. Sunny, what's the status of Bhaiyaji Super Hit? Do we see it releasing this year? I mean, theatrical release? I think you should ask the producer. I'm just an actor there. Okay, thanks. And on that note, सर आप फिल्म में सेल्फी ले रहे हैं, और सर ने अभी एक्शन रिएक्शन की बात करी, तो एक्शन ये होगा कि हम सेल्फी खींचेंगे सबके साथ, और रिएक्शन ये है कि आप लोग पाउट कर सकते हैं, or whatever you all can give your other reactions as well. But lights in this theater auditorium. Yeah, we'll have more lights. But can I also request Deepti to please join us onto this stage for the opportunity? Yes, and of course, इनकी better half, film की producer and producer of, yeah. So yeah. I just want to take this opportunity and thank my team members as well. Paritosh and Bunty are here. They are writers, co-writers with me on this film. Then I think Somnath Pakre is here. Somnath is here. He's our production designer. Yogi Raj Shetty. He's our. Can I request the team to please stand up so that everybody can? And can we give them a big round of applause? Congratulations to you guys as well. Yes, please stand up wherever. Dheeraj is here. Dheeraj is our costume designer. Nikhil Rosario, our co-producer. So Nigam is here. Our DOP. Nigam, okay, there he is. So जो अच्छे visuals दिख रहे हैं वो उसके पीछे, हाँ, कैमरा के पीछे अभी भी, शाबाश. तो ऐसी सारी टीम है, so I would really like to thank all of you guys. Thank you so much for being a part of this and helping me on every step. So I would like to really invite all of them and we can have a please. group So selfie. we'll have one photo opportunity, and then we also intend to have a poster along with the media. We'll have a selfie. But sir, let's first.